व्हाट्स अप गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ मिस्टर जोकर। और गाइस आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने गेटिंग और रूट को 5 मिनट्स में कंप्लीट किया है। सिर्फ 5 मिनट्स में। हाँ, हालांकि ये कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने देखा है यार कि बहुत लोगों से नहीं होती गेम। पर बात उनकी नहीं चल रही है, बात यह है कि मैंने आज 5 मिनट्स में कंप्लीट की। पर 5 मिनट्स में कंप्लीट करना भी कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि जैसे कि मैंने अब तक देखा है कि 5 मिनट्स में कंप्लीट करने के लिए आपको किसी भी पॉइंट पर स्टक नहीं होना पड़ता। मैंने बहुत बार ट्राई की है और मेरा रिकॉर्ड अब तक का बस 7 मिनट्स का रहा है। सिर्फ तो मेरा रिकॉर्ड बस 7 मिनट्स का है। तो मुझे इससे ये बात पता चली कि आपको किसी भी पॉइंट पर स्टक नहीं होना पड़ेगा, रुकना नहीं पड़ेगा, आपको कंटिन्यूस चलते रहना पड़ेगा। तब जाके आप इतना 5 मिनट्स से कम समय में कंप्लीट कर सकते हो। तो यार इतना मैंने कर लिया। मैंने बहुत कोशिश की, पर ऐसे कुछ पॉइंट पे मैं स्टक हुआ, फिर भी मैंने गेम कंप्लीट की। और हाँ, आपको इस गेम में ये भी ऐसे कुछ पॉइंट भी देखने मिलेंगे जो मैंने बिना किसी रुकावट के पार किए, जैसे कि बकेट स्किप और ऑरेंज हिल। बहुत जल्दी क्रॉस किया मैंने, मुझे भी यकीन नहीं होता। तो आप इस मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी इस वीडियो को देखो और इससे कुछ सीखो। तो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखो, पेशेंस रख के देखना, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको गेटिंग ओवर इट गेम सीखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, अलग अलग ट्यूटोरियल्स दिए हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। और इस गेम प्ले में मैंने वही टिप्स यूज़ किए हैं, ट्रिक्स यूज़ किए हैं जो मैंने आपको ट्यूटोरियल्स में दिखाए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो इस गेम प्ले के बाद जाओ और वो ट्यूटोरियल्स देखना, ठीक है। तो आपको भी पता चलेगा कि गेम को कैसे जल्द से जल्द कंप्लीट करें। तो ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं कि कैसे मैंने गेम ये कंप्लीट की। और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ट्रस्ट मी गाइस, ठीक है। You're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. The obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. When you're building a video game world, you're building with ideas, and that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world, not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are trash. I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context, and once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. And you can build culture out of trash, but only trash culture. B games,
B movies, B music, B philosophy. Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. Grand, infinite, and unsorted. There's 3D models of breakfast, Gen X's fanfic novels, scan magazines, green screen Shia LaBeouf, banned snuff scenes on LiveLeak. Facebook's got lifelike bots with unbranded adverts and candid shots of Kanye and Taylor Swift mashups, car crash epic failed GIFs, Russian dashcam vids, discussions of McRibs. सो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी करके बताना कैसा लगा।